Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the columns and choose the appropriate option. In this particular question, we are provided the two columns, column number 1 and column number 2. In the column number 1, we have provided the different types of the plant tissue. For example, your parenchyma, collenchyma, sclerenchyma and your xylem. In the column number 2, we have provided some features of these tissue. अब हमें इनको इनके करेक्ट फीचर के साथ मैच करना है and on the basis of that we have to tick any one of the following option given in the question, that is A, B, C and D. So first of all, the key concept here would be your plant tissue types. So let's start. So first of all, we will write key concept, and the key concept is plant tissue. So as we know that we can divide plant tissue basically into two portions. First one is a meristem tissue, which has the unlimited capacity to divide. The cells that are found in the meristem will have the ability to divide continuously, and they mainly help in the growth, whereas second portion will be our permanent tissue. Or on the other hand, परमानेंट की जो सेल्स होंगी, परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स पाई जाती हैं, दे डू नॉट हैव द अनलिमिटेड कैपेसिटी टू डिवाइड. नाउ द परमानेंट टिश्यू कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, simple permanent tissue and your complex permanent tissue. Now as the name suggests, simple. So in simple permanent tissue only one type of cells will be found. ऐसा नहीं होगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स वी आर फाइंडिंग. नो, in the complex tissue on the other hand we will have different kinds of cell in a single tissue. अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाएंगी और हर एक टाइप की सेल अपना कुछ अलग काम करेगी. देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इन द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. जबकि सिंपल टिश्यू में एक अगर टिश्यू की मैं बात करूं तो उसमें एक ही टाइप की सेल्स होंगी. नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है into three portions, and these are your parenchyma, जो कि लिविंग होता है, your collenchyma, that is also living. इसमें जो सेल्स होंगी they will be having the properties of a living cells. And third one is a sclerenchyma. The catch is sclerenchyma की जो cells होती है, these are dead. Now we have to solve the question smartly. We will see the options very smartly और हम बेस्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे. Now complex permanent tissue को further divide किया गया है into two parts. We will see in the next slide because we do not want any messiness here. So as I told you that simple permanent tissue and your complex permanent tissue both are part of permanent tissue. So now simple, as I told you, we have three options here. Parenchyma. अब जो पैरेनकाइमा की जो सेल्स होंगी ना, पैरेनकाइमा जो टिश्यू होगा, इसकी जो सेल्स होंगी, these will be like this. These will be oval in shape. They will have large vacuole. They will have dense cytoplasm. Thin walls will be there, and cells will be arranged like this. ये मैंने जो डार्क कलर का बनाया, that is nucleus, ये cytoplasm है, and this is your vacuole. So you can see that cells are some like this. Intercellular space we can see in the cells, and they are circular in shape. Whereas अगर मैं कोलेनकाइमा की बात करूं, कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं, these are not oval in shape, these are not circular in shape. लिविंग होगी, यहाँ पे जो सेल्स होंगी, यहाँ पे भी आपकी जो सेल्स होंगी, these will be living. This is the main important point of differentiation in all the three types of your tissue. And third one is your sclerenchyma.
स्क्लेरेंकाइमा के जो सेल्स होंगे these will be your dead in nature. So let's mark that dead. Also जो स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल्स होती हैं they have deposition of lignin. लिग्निन एक तरह का पॉलीमर है that is found in the cell walls of the sclerenchyma tissue. अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू योर टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज योर xylem and second one is your phloem. These two are your conducting tissues. Conducting means to say that कंडक्शन में हेल्प करेंगे. अब कंडक्शन किस चीज का? कंडक्शन प्लांट्स में टू थिंग्स का होता है. फर्स्ट वन इज योर कंडक्टिंग टिश्यूज और कंडक्शन किसका? वाटर का एंड योर फूड का. The food or this plant sap, we can say that the leaf has made during the photosynthesis. So for water we have a separate tissue with us, that is your xylem. Xylem will be responsible for conduction of your water. जितने भी मिनरल्स होंगे वाटर में डिसोल्व और आपका जो भी वाटर का कंडक्शन होगा, फॉर दैट योर xylem will be responsible. Whereas for food conduction your phloem will be responsible. You can also remember by a trick that flow मतलब food, ऐसे याद रख सकते हो कि phloem जो होता है that is responsible for food and your water is responsible for and your xylem is responsible for your water conduction. So now if we get back to our question, let's see the options. So parenchyma की अगर मैं बात करूं, so I told you that parenchyma has oval or circular cells. So it will be correct to say that parenchyma के साथ ये वाला ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा. Am I right? Because the first option says isodiametric cells. So A के साथ जाना चाहिए हमारा, I am writing here, A के साथ जाना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नाउ फिर है xylem. अब xylem का हमने अभी पढ़ा था that it is responsible for the conduction of water. तो D के साथ जाना चाहिए फोर्थ. So I am writing here. Okay. Now sclerenchyma we have also studied that sclerenchyma में dead cells होती हैं और उसमें lignin का deposition we can see. So sclerenchyma के साथ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, lignified cell source. Lignified means to say that there is a deposition of the lignin. So C के साथ I can mark second. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्या बचा? कोलेनकाइमा. एंड कोलेनकाइमा में हमारी लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, जो कोलेनकाइमा होता है इसके अंदर लिविंग सेल्स होती हैं और कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड इन नेचर होती हैं एंड दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड योर प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. सो दैट्स व्हाई बी के साथ हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. सो बी के साथ क्या जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन, दैट इज योर मैकेनिकल टिश्यू. अब मैच करते हैं. ए का फर्स्ट किस में है? ए का फर्स्ट दो में है, बी में और सी में. फिर बी की तरफ चलते हैं. बी का होना चाहिए थर्ड. अब बी का थर्ड केवल सी में है. देन आफ्टर दैट सी का अकॉर्डिंग टू अस सेकंड होना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी में सी का सेकंड है. एंड देन डी का हमारे अकॉर्डिंग फोर्थ होना चाहिए एंड ऑप्शन नंबर सी में डी का फोर्थ है. तो करेक्ट आंसर विल बी करेक्ट option should be your C. I hope you understood the concept. Thank you.